So we are going to continue last time where we left, in the sense that हमने ये किया था, we had जो हमारे पास जो momentum space है, position, how we जो Fourier transform में how position space and momentum space how they are somehow related, and we represented the position space and momentum space में we representing wave function in terms of psi and phi, and we saw how psi is related to phi as an inverse transform with transform, and phi from phi how can arrive at psi. That was the thing. So before we are going to continue, so we are going to just write psi of as a part of, because ये हमको use they will be throughout useful. So psi को in terms of phi अगर हम लिखेंगे, that's it. This exponential of what or d3p. So it's momentum space. So phi rt. So this is position space. P dot r d3r. So you have psi rt. This is d3p. This is momentum space. This is phi rt. This is, so psi and phi can be somehow, they can be related by a Fourier transformation. So अब हमने last time we just arrived at a we arrived at an equation at the end. If you remember, I only write it d phi pt by dt p square by 2m phi of pt plus 1 by 2. This is a differential integral equation which we got when we had a required Fourier transforms here. अब ये है कि I had given you as an exercise. Did you attempt it? So हमने कहा था we arrived at this integral differential equation. Now, or sorry, it's a mixed differential equation. So if we help it to solve it by appropriately phi और psi का इस पे substitution करेंगे, so this differential equation can be also written as an analytical function v of r delta p minus iota h. So it's an exercise which I thought that I assume that you have done. If you have not done, so let it be. So we do it in the separate class. So we have arrived at this thing. अब इसको हम थोड़ा सा, if you just substitute this value of exponential, if you write it in terms of and substitute it here, it will give us Schrodinger equation back. It will give us. The point is that if you have suitable जो हमारा ये है जो wave function psi and phi and inverse transforms, and you have suitable substitute at the end arrive at this differential equation, and if you substitute इसका value, if you substitute इसके बदले हम ये लिखेंगे, we will at the end arrive at हमारे पास जो Schrodinger equation है इसका form आएगा in p and t coordinates, in position and momentum coordinates. It will come out to be like this: p square by 2m phi of pt plus v of phi of pt. ठीक है? So this is it. So if you see to the book, his exercise. So you have to arrive from this. You have to arrive this. For that you have to substitute. इसके बदले यहाँ पर ये लिखना है and do the suitable integrations. UV form में जो भी हम करते हैं. ठीक है? So it's an exercise. So you do at your place or we will do it step by step.
अब अगर हमारे पास ये श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई तो now what we can do is if we multiply this equation, if we multiply, this is 3 point, if I use the book key 3.21, it's 3.22, and if it's 3.23, so if you multiply 3.21 by 5 star, which is the complex conjugate, and 3 the way we did it पिछली बार भी हम पहले इसको साइड से मल्टीप्लाई करते थे, फिर साइड स्टार से मल्टीप्लाई करते थे, एंड देन सबट्रैक्टिंग द 2. So if you do this exercise, first multiply it by 5 star, and then by 5, then by 5. So what we'll get जो हमारे पास आएगी, and integrate the resulting equation over the entire momentum space. Integrating the entire equation over the momentum space, and after some change of variables, again this is an exercise, we'll get 5 star P, phi of PT, D3 P is 0. So we have to multiply 3.21. हाँ, again, so it's again a tedious exercise. इसको multiply करेंगे पहले 5 के साथ, then we multiply it by, then we subtract. So it's एक पेज का रफ है ये, ठीक है? So once you do it, it will come out to be this. It will come out to be this. So if it comes out to be this, what does it mean? What does it mean? It means that Fourier transforms जो ये हमारे पास है, if I write it 3.18, जो in position space and momentum space जो ये है, if you represent psi and phi as a wave function, how they are in position space and momentum space, if you arrive at this equation, it means what? It means that phi of PT square modulus, because ultimately ये है ना psi और phi, ये phi star आएगा, that will be phi square, है ना? psi है ना, psi star, psi किसके बराबर है? This gives, so इसमें एक बार हमने मल्टीप्लाई किया था phi के साथ एंड फिर 5 स्टार्स के साथ. आप अगेन यू कैन डू द सेम थिंग, एक बार इसको 5 स्टार के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर psi के साथ, एंड सबट्रैक्टिंग द 2, विल हियर गेट psi स्क्वायर t, ठीक है? सो अगेन दैट विल आल्सो बी इक्वल टू, एक इक्वेशन ये हमारे पास आएगी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास आएगी ऐसे, psi स्टार pt, psi सॉरी ये आएगी एक P में आएगी, दूसरी R में आएगी. So it will be in position space. This will be in momentum space. It will be in position space. It will be also equivalent to 0, and it will. So this will be also equivalent to this is 0. So this means psi is equivalent to 5 star 5. This means 5 star square. This is the modulus here. It will be equivalent to psi square 5. So it will be equivalent to, if you write it like this, it will be equivalent to phi of PT momentum space में इसका जो square of the modulus in the 3-dimensional space will be equivalent to a quantity in the position space. हाँ, so that's it. So अब इससे क्या पता हमको चला? This means that this equation implies if psi is normalized by unity for any t and phi is, so if this is normalized to unity, this is also. अब ये है कि so this exercise will help us कि what is the important difference in classical mechanics and quantum mechanics, which I'll show how. So since exponential of iota h by p dot r represents a sharp definite momentum,
P phi of P according to this equation. According to this equation. And this is the amplitude and phi is also strongly peaked. So अब हमारे पास जो है ये psi star RT and phi of PT, they are the amplitudes of a wave psi in momentum space and in position space. They are somehow related. So a wave function psi, uska evolution in position space is somehow related to a wave function phi in the momentum space. So this is how, and B psi and phi are written in the Fourier space via this integration. ठीक है? This exponential क्या है? ये basically sum of all those Fourier waves है, जिसका superposition हम निकाल रहे हैं. ठीक है? जिसका wave packet का amplitude हम कहते हैं, that will determine the where the particle is, where the quantum mechanical particle is. अब हमारे पास ये है कि so if you remember मैंने कहा था कि यहाँ पर हमने we had this substitution here, यहाँ से हम Schrödinger equation तभी आए थे ऐसे, we made this substitution, we said कि exponential of iota p dot r को अगर हम ऐसे लिखेंगे, if we write it this, then only we can arrive at this thing. So why should we substitute this thing, this wave function को in terms of यहाँ से del p, in terms of momentum space हमने substitute किया. Then we arrived at the original Schrödinger equation. तो इसका मतलब क्या है? इस substitution का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि the step we did here, it means that for any function f of r p, the coordinate function को हमने we can represent it as r h by iota into del. Del है हमारा ये momentum space में differential d by dx, d by dy, d by dz. और Fourier transforms of each other in some sense. अगर आप ऐसे है, तो अगर आप ऐसे है that we have represented f को हमने ऐसे represent किया, that's why we can arrive at Schrödinger equation. So by substituting, by having a variable this here, we arrive at Schrödinger equation. So we are going to go, जो हमारे पास original जो Fourier space का expression है, so हम will not जो position space है, और we are going to RP को हम we are going to do these suitable substitutions. If we have done it here, we are also going to do it in the original wave equation. Original wave we define psi and phi, which are wave functions in position and the momentum space, where there is a procedure of going from position space to the momentum space and vice versa. So how the two functions are related. So why we do these adjustments? Why we make a function from position space to momentum space and vice versa? It's a helpful technique in Fourier analysis, because how we sum waves in an analytical function में क्यों हम waves को sum कैसे करते हैं? So that technique is helpful, and that's also helpful here also. How we see wave functions कैसे evolve करते हैं space time psi, which is given by Schrödinger equation. अब अगर हमारे पास ये है, so if it is like that, so if it's like that, so before, so we have gone a bit, so before coming to this point, so I'll just
make one important point which I have just missed. जो ये हमारे पास फाइव है, फाइव पीटी स्क्वायर, this is probability of finding a probability of finding momentum of a particle in the volume element d3p. ठीक है, so this is phi of pt. This is trying to find the this is scale. This is what? This is a probability of finding the particle in phi space. So in the same way we have to find the probability of a particle in the psi space. ठीक है, so this means what does it mean? इसका एक important ये है. So it means there is some symmetry of R and P. There is some symmetry of R and so we have a wave function phi in the momentum space and we have a wave function psi in the position space. So position space is related to momentum space and vice versa. So इससे क्या पता चलता है हमको? इससे पता चलता है हमको. So if you remember in classical mechanics आपके पास position होता था and momentum, है ना? Hamiltonian mechanics, position है. तो दो variables हमारे पास हैं. Position and momentum can be simultaneously determined, है ना? So if they are conjugate variables, they are p and x. So px minus xp is equal to, है ना? मगर यहां आप देखते आ रहे हैं कि px minus xp is equal to iota h cross. ऐसे देखिए कोई इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स. So it's not necessarily equivalent to. So here, how can you interpret before coming to? You just don't know this equation. You know classical mechanics में you can do measurements like this. You can pin down two variables simultaneously at a given point. ठीक है? Which you know from this. But in quantum mechanics you cannot do it. Why? So so it means that जो हमारे पास psi and phi अगर हमारे पास जो है they are correlated. So psi and phi are related by some Fourier transform. They are related by some Fourier transform. So it means they are Q and P are correlated. So it is seen from our this exercise. So phi and R यहाँ पर ये independent है classical mechanics में. यहाँ पर हमने due to the peculiar how we can define psi and phi in position and momentum space where there is a symmetry of these two functions. So this means they are not independent from each other. Psi से हम P से हम R की तरफ जाते हैं, R से हम. So P and R are not independent. So this means if they are not independent, so अगर हम इस चीज को मेजर करेंगे simultaneously it will also affect this. हम वेव फंक्शन को इन मोमेंटम स्पेस में मेजर करेंगे, it will affect the same quantity in the position space. If किसी उसी क्वांटिटी को आप position space में मेजर करेंगे, it will affect the same because they are correlated. You can go from momentum R to P and P to R. So they are basically psi and phi. They are wave functions in two spaces. In classical mechanics, you can simultaneously measure P independent of X and measure X independent of P. Such that इनका अगर हम conjugate निकालेंगे और commutator निकालेंगे ऐसे, it will come out to be जीरो. अगर उसी वेरिएबल को एक जगह मेजर करेंगे फिर उसी को दूसरी जगह मेजर करेंगे एंड इन द रिवर्स केस विल डू इट. पहले हम x को मेजर करेंगे फिर p को मेजर करेंगे फिर p को मेजर करेंगे फिर x को मेजर करेंगे विद द सेम वैल्यूज. इट विल कम आउट टू बी. बट हियर
once we since these position and this momentum variables which represent wave functions in psi and phi space, ठीक है, they are somehow correlated. They are correlated. You cannot independently measure one without somehow changing the other. ठीक है, अगर आप पहले पोजीशन को मेजर करोगे, ठीक है, एंड देन मोमेंटम को मेजर करोगे, it will not be the same as if you are measuring momentum first and if you change the order. जैसे 2 into 3 है ना, is equal to 3 into, अगर आप ऐसे मेजर करोगे या ऐसे मेजर करो, फर्क सेम जीरो आएगा. मगर क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि if phi and position and momentum variables are measured separately, ठीक है, the values will not come out to be same. If you measure momentum value पहले ये order से, because the two are somehow related. The two are somehow so this is the main difference from classical mechanics and quantum mechanics. The way we try to understand these things from a Fourier understanding. Fourier जो है Fourier space में how position space and momentum space are somehow related vis-a-vis two wave functions phi and psi. Phi and psi. ठीक है. So this was the important point. अब यही कि we are going to the same thing in terms of some expectation values which I said yesterday. Expectation value हम calculate करते हैं in terms of variance, है ना, P of phi और variance हम कहते हैं square of mean minus mean of square, that will give us variance. तो उसी से हम कहते हैं expectation values P probability into that variance. तो बेसिकली ये हम क्या करते हैं, ये बेसिकली when we calculate the position space and momentum इसका variance निकालते हैं for these two observables. For these two observables, so the variance doesn't come out to be same. The variance doesn't come out to be same. या expectation value अगर आप पहले position operator फिर momentum को calculate करोगे and vice versa, पहले momentum को करोगे फिर position, so it will not come out to be zero. This is another way of saying the same things. They are not commuting. हम कहते हैं आगे language में commuting operators. We are going to do this thing in detail in future chapters. हम Heisenberg's uncertainty relations को कैसे in terms of commuting relations how we represent them, that they don't commute, they don't, हम कहते हैं in the language they don't, इसका commutator जिसका bracket में zero नहीं आएगा, ठीक है. This we will do it in the coming chapters. Here we have an idea of the same thing only in terms of position space and momentum space, ठीक है. That's it. हाँ, अब इसमें सिर्फ ये है कि वो वाली इक्वेशंस है, you have to we did some substitutions there. So the probability जो हमारे पास है, probability interpretation of momentum wave function phi allows us to construct expectation value of momentum space, of momentum of any state psi or phi. So you can also have from position space to momentum space, but we have only to see एक में psi wave function है, दूसरे में phi है, ठीक है. Psi का in terms of phi, this is the wave. D3P is the 3 dimension.
इस तरह फाइव इन टर्म्स ऑफ साइन, फाइव इन टर्म्स ऑफ साइन, तो इस और इसमें से क्या है कि माइनस फर्क का फर्क आता है। अब हम निकालेंगे हमारा जो हम कैसे कल वेरिएंस या एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम मोमेंटम स्पेस में, so it's always helpful, there is an appendix to the book, you can see it, or you go to any book of statistics, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द मीन माइनस मीन ऑफ द मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रल किस स्पेस में है। फॉर एग्जांपल वेरिएंस इन मोमेंटम स्पेस जो हम निकालेंगे, सो इट्स p फाई ऑफ pt स्क्वायर dt। So, अब हमारे पास ये है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ साइन कैसे निकालेंगे। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन हम करेंगे काम 3 पॉइंट, इसको हम सबस्टिट्यूट करेंगे यहां पर, है ना। फाई ऑफ पीटी को यहां पर सबस्टिट्यूट करेंगे। सॉरी, ये आर है, ये पी है, मोमेंटम स्पेस। सो वी हैव टू सबस्टिट्यूट। इसमें हम अगर हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ना पी अपना ही है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, इट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। हम कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं ऐसे, ये फाई है बेसिकली स्क्वायर ऑफ द मीन, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऑफ, यहां ये फाई है बेसिकली फाई स्क्वायर जो है ना, इट इज बेसिकली एक्स, जो कोई भी वेरिएबल अगर वेव फंक्शन है या कोई, बेसिकली ये मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी। जैसे अगर डाइस है इसकी 6 है, 1/6 है ना, टोटल नंबर ऑफ टू सैंपल स्पेस की कितनी है, ठीक है, डिवाइड भी करते हैं 6 के साथ, डिवाइड भी जो भी है। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल, तो बट वी आर डूइंग द सेम थिंग इन द मोमेंटम स्पेस, सो इट्स लाइक दिस। तो हम हमारे पास सो वी आर गोइंग टू सबस्टिट्यूट, आप इसको हम इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, इसको यहां सबस्टिट्यूट करेंगे, हाँ। तो व्हाट विल इट विल कम आउट टू बी, अब अगेन वी आर गोइंग टू डू इट इन टर्म्स ऑफ साइन। फाई को ये है ना, फाई ये आएगा फाई स्टार और साई स्टार, है ना, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, यू कैन राइट इट लाइक दिस, अगर इंटीग्रल है साई स्टार और टी, है ना, यहाँ फाई को हमने इंटरजेक्ट का साई, बट यहाँ फाई नहीं, यहाँ फाई स्टार, ठीक है। तो 2 बार आएगा साई स्टार आएगा, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू राइट एक साई स्टार और टी आएगा, और फिर अपना एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एच बाय पी डॉट आर, पी ऑफ फाई ऑफ पी टी डी थ्री आर इंटू डी थ्री पी अपना ये है, इसका है ही है, डी थ्री आर आ गया यहां से, एंड यू डू द suitable substitutions here. So अगर आप हमारे पास ये है, और you can write it like this, h by iota. So if you remember हमने यहाँ पर substitution किया था, यहाँ पर exponential of, I'll write again this thing, we did this thing, exponential of minus iota by h p dot को हमने ऐसे लिखा है, then only we got the Schrödinger equation after that substitution, which we have not done, that's an exercise, we have to do it, yes. So if you do this, इसको again you can write it like delta exponential of iota h ये r है and so if you do this way, so you can do, एक हो गया now after
if I use the words of the after the liberal exchange of integrals. Liberal exchange of integrals means you solve the things in and using 33.18 using this equation. इस equation को use करते हैं. The desired result is psi star r t. So इसके बदले हम लिखेंगे हाँ phi of exponential of इसके बदले लिखेंगे हम psi. हाँ h by iota यहाँ लिखेंगे, इसके बदले लिखेंगे हम psi. psi of rt d3p. ठीक है. So you have written this expectation value in the momentum space of wave function psi को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. So in the same way, the same technique can be applied to analytical function for momentum. अगर दूसरा फंक्शन है gp, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. So you can, if it's for position space, you can write it for यहाँ r है या p. So we should be able to write the expectation value in momentum space or expectation value in the position space. तभी तो हमको निकालना है ना commutator. हमको दिखाना है p of r minus r of p, whether they will commute or not. That's it. So we are going to write expectation value here. So any other function g of p. तो अगर हम you can also write it as एक तो psi square function है. Then you can write it like एक psi है, ये rt h by iota डेल्टा, ये हमारे पास है. एक्सपोनेंशियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो यू कैन राइट इट h by delta psi of rt d3r. नाउ जो डेल्टाज है हमारे पास, जो हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया, डेल जो है दिस सब्स्टिट्यूशन व्हिच वी डिड लास्ट टाइम. सो डेल जो हमारे पास है इट्स ए डिफरेंशियल है ना, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड है ना. स्पेस में कैसे व्हेन समथिंग वाज इन स्पेस हाउ इट, इसका डिफरेंशियल अलोंग एक्स वाई और जेड क्या आएगा. सो जो हमारे पास ये है, we have so expectation value along f of r in terms of this differential dtr can be written as phi star f of iota h pt. तो अब हम करेंगे इन क्लासिकल मैकेनिक्स, या आपने पढ़ा होगा ना डाइवर्जेंस कर्ल, इफ यू रिमेंबर है ना. वहां हम लेते हैं ना, अगर मोमेंटम निकालना है हम एक्स डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे डी बाई डी वाई माइनस डी बाई डी जेड. तो इट विल बी इन द जो उसका ये होगा ना, फॉर एग्जाम्पल पोलराइजेशन इज एक्स वाई होगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. द प्रोपगेशन विल इन द जेड डायरेक्शन. इफ इट विल बी एक्स वाई इट विल बी इन जेड. इफ इट विल इन द जेड एक्स होगा ये प्लेन जहां से ये, तो प्रोपगेशन विल बी इन द
z, अगर x y होगा तो z में होगा, अगर x z होगा तो सो ये दिस इज इन क्लासिकल मैकेनिक्स सिंपली। बट हमने क्या कहा था, हमने ये कहा यहाँ पर जो पोजीशन एंड मोमेंटम है ना, दे डोंट कम्यूट। जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कम्यूट करते हैं दो वेरिएबल्स x एंड p, सो यू कैन साइमल्टेनियसली मेजर द टू, द ऑर्डर डजंट चेंज। और अगर हम x को पहले मेजर करेंगे p को बाद में, x को पहले p को बाद में, p को, so it will come exactly for two commuting, it will come out to be 0। मगर हमने कहा कि these two variables which you are measuring, they are simultaneously correlated, you cannot measure one without affecting the other, ठीक है। so that way अगर हम आप काम करेंगे जो हमारे ये पोजीशन एंड मोमेंटम वेरिएबल्स हैं, इन टर्म्स ऑफ हम करेंगे काम, एक हम क्लासिकल वे में देखेंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू, इफ वी विश टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मिक्स्ड फंक्शन, ये कह रहा है इफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मिक्स्ड फंक्शन, f of x, p, y, z, we'll carry out Fourier analysis only part of the way we define mixed coordinates। तो ये कह रहा है कि फोरियर एनालिसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं selectively, the way we define the, if you change the coordinates, for example हमको ये x, p, y, z है ना, एक x and z, p momentum is not, momentum is in the axis which this way। so if you define if you want to calculate expectation value of the mixed function, अगर हम mixed function को हम ऐसे define करेंगे, then Fourier analysis can be defined only as part, we define the coordinates, we define mixed coordinates, coordinate, momentum, wave function by the integral। so what we are basically doing before जैसे कोई चीज है ना, when you study classical mechanics या कोई भी branch of science, so we first will see कि ये किस लैंग्वेज में इसको लिखते हैं, ठीक है। we are trying to say we are writing psi and phi in terms of Fourier waves, in terms of and their representation, that's our first। in the first stage हमको दिखा कि जो commuting operators हैं, so they should not exactly commute in this language, ठीक है। so this is हमारे, तो आगे करते करते we try to learn more and more things। so in the first stage it's not that you may not feel totally understand, है ना, where 70%, 50%, 60% you become first familiar with the terminology, ठीक है। that's it, the understanding will come by and by। तो अगर हमारे पास मोमेंटम इंटीग्रल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, for x, p, y, z, mixed integral psi of rt exponential of जो इसको स्क्वायर ऑफ द प्रोबेबिलिटी भी क्या देगा हमारा, स्क्वायर ऑफ द प्रोबेबिलिटी विल बी द दिस प्रोबेबिलिटी। so we have defined function chi as in terms of odd coordinates x, z and py। तो इसका हमारे पास जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, so जो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा ये जो हम देखते आए, this is the probability density in x and z,
but y is not determinate, y is indeterminate. So we have थोड़ा सा हमने किया काम जो नॉर्मली हम psi of x y z करते हैं ना, तो a को हमने और चूजिंग कोऑर्डिनेट लिया, ठीक है. एंड लेट मी सी. हाँ, सो जो हमारे पास f of x पी वाई जेड, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू विल कम आउट टू बी, हाँ 2 सेकंड में जस्ट स्टॉप. So similarly, if we do the R and P for specifying the conjugate variables, so एक तो psi के लिए किया, एक phi के लिए किया, then we can write f of R P expectation value of. So if you have similar coordinates for R and P, position and momentum के लिए simultaneous specification of the conjugate variables. So now on, what we are going to do, we are going to specify position and momentum, energy and time. So one variable को हम relate करेंगे दूसरे variable के साथ, उसी को हम कहते हैं what? Conjugate variables. So in classical mechanics, the conjugate variables का measurement, simultaneous measurement always commutes. ठीक है. In the language of Fourier analysis, we say these conjugate variables are intimately related. You cannot measure one without other. So that way it will not come out to be, they will not commute. So if we write it, so we stop here. So we are going to write फिलहाल conjugate variables in psi space. That will be written as this. Come on. And other in the phi space. अब इसमें ये वाली इक्वेशन हमने यूज की. So in the second one we have just changed this exponential here. We wrote exponential in terms of this. So this is d3p, this is momentum space, this is position space. This is psi star, this is pi star. So these are the expectation value of R and P. R and P. So you see जिस तरह आप angular momentum निकालते हैं ना, x px minus, है ना, ऐसे निकालते हैं ना, कि नहीं, ऐसे निकालते हैं x py minus py x, है ना. So you see two commuting variables in classical mechanics, and here we are not going to, क्योंकि हमारे पास exact value नहीं होता है, हमारे पास expectation value होता है, variance होता है. So we are going to calculate the variance of position and these coordinates, ठीक है, and see whether they will commute on the both sides or not. Yeah, so that's it. So stop here. So इसमें सिर्फ यही रखना है. This is the main point. The commuting things, they commute here. In the implicit language of the Fourier analysis, they do not commute. ठीक है? Because we have defined this psi and phi है ना, psi is defined in the position space, phi is defined in the momentum. Psi and phi are related. Psi and phi are, we cannot measure psi, we cannot relate psi and phi
हाँ, that's it. चलो stop.